Let let me start here. So now once again I will repeat this experiment. This is a three-phase soil system: air, water, and solids. Volume of voids is E, volume of solids is 1, volume of water is EW. Clear? S is equal to degree of saturation. Degree of saturation is defined as volume of water by volume of voids. So volume of water is EW, volume of voids is E. Therefore, this is EW by E, or EW is equal to E into S. This is equation 1. EW is equal to E into S. This is equation 1. The term EW is known as the water voids ratio. For a fully saturated sample, EW is equal to E. For a fully saturated sample, E, because S becomes 1. देखिए S 1 हो जाता है, EW is equal to E. बोलने की भी जरूरत नहीं, या नहीं तो सारा पानी भर गया तो ये E हो जाता वाटर. Now, water content is equal to weight of water by solids, which can be converted into the unit weight into value, EW into gamma W, gamma S into 1 because volume of solids is 1. So from this one you remember, and from we can also know that G is equal to gamma S by gamma W. So from this we write gamma S is equal to G into gamma W. Okay, so now you substitute the value of gamma S above here. So water content is equal to EW gamma W divided by G into gamma W. G into gamma W. Gamma W get cancels. Water content is equal to EW by G. EW by G, or EW is equal to small w into G. This is equation 2. This is equation 2. From 1, EW is equal to E into S. And from 2, EW is equal to omega into G. Equating right hand side of both, ES is equal to omega G, or E is equal to omega G by S. This relation is very, very, very important and used in many problems. This relation is very important and used in many problems. So remember, relation between E, W, G and S is E is equal to WG by S. And suppose soil is fully saturated, S becomes 1, or E is equal to W saturated by G. W saturated by G. So this is the relation. इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो मुझे. If ask कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आया तो बोलो, मैं आपको समझाता हूँ. प्लीज चैट बॉक्स में लिखो या अनम्यूट करके पूछो आप. If you are any doubts, if you have followed it is well and good. लेकिन इसको जरा करना पड़ता खुद, आज ही नहीं, आप घर में जाके फिर करो, फिर मुझे पर्सनली पूछो, आई विल टेल यू. कुछ डाउट है? नहीं है? सबको समझ में आया? तो क्या समझ में ही नहीं आया? दो ही चीजें हो सकती है, तो आपको समझ में आया या आया ही नहीं, क्या आप देख रहे हैं? एनीवे, रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. E is equal to omega G by ES. E is equal to omega G by ES. Got it? The first derivation is over. So now we will go for second derivation. ऐसे बहुत सारे derivation है, 20-25. आपको हर छोटे छोटे हैं, लेकिन आप परफेक्ट एक रहे तो अगला आपको इजी से आता. सो रिमेंबर, E is equal to omega G by ES. E is equal to omega G by ES. Clear? Shall I move further? Yes लिखो तो ये आगे जाता हूं मैं. एटलीस्ट कुछ तो समझ में आप सुन रहे हैं, आप प्रेजेंट है नहीं. एटलीस्ट यू राइट एनीबडी yes. So I will go for the next derivation. So E, okay. Okay, beta, Pratiksha. Okay, so now I will go for second one, that is relation between E, S and NA. What is NA? Can anybody tell me? Right? What is NA? जल्दी लिखो. Okay, Kshitija. What is NA? E is voids ratio. S is degree of saturation. What is NA? What is NA? Relation between E, S and NA.
percentage of air void. Very good. Percentage of air voids, and percentage of air voids डिग्री ऑफ सैचुरेशन और E के बीच में हम एक नया रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, एक नया रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं. दिस इज डेरिवेशन नंबर 2. This is derivation number 2. Now from the definition, NA is equal to VA by V, volume of air by volume, total volume. Okay. Now VA is equal to कितना? Volume of voids minus volume of water. ये तो क्लियर है आपको. voids में क्या क्या रहता है? एयर रहता और वाटर रहता. Volume of voids minus volume of water. So what is volume of voids? Volume of voids is E. Volume of water क्या है? Volume of water is EW. So this is E minus EW. It is E minus EW. VA is equal to E minus EW. E minus EW. So now total volume is equal to volume of solids plus volume of voids. Total volume, ये तो VA का न्यूमरेटर होगा. न्यूमरेटर क्या है आपको? E minus EW. डिनोमिनेटर क्या होता है? Total volume is equal to volume of solids plus volume of voids. So this is 1 plus E. So now NA is equal to E minus EW divided by 1 plus E. E minus EW divided by 1 plus E. So now NA is equal to E minus EW divided by 1 plus E, or EW can be written as E into S. This also I defined here somewhere here previously. E into S. So now E into S, 1 plus E, you take E as common. So now NA is equal to E into 1 minus S divided by 1 plus E. 1 plus E. तो ये क्लियर है क्या आपको? देखो प्लीज अच्छी तरह समझो, ये बुक्स में भी है दुनिया के. आप एक बार आपको समझ में आया तो एक बार प्रैक्टिस करो, फिर मुझे पूछो. लेकिन स्लाइड्स भी मैं आपको आज शेयर करता हूं, तो यू विल अंडरस्टैंड इट. नॉट दैट मच डिफिकल्ट, बट आपको बेसिक से स्टार्टिंग से मालूम होना. अब बीच में आके ये कैसा आया नहीं मालूम, इस चीज में आपको कहीं तो कोई प्रॉब्लम है तो बोलो. रिलेशन बिटवीन E, S एंड NA. Relation between E, S and NA. Okay, no problem. Okay, beta. So NA is equal to E into 1 minus S divided by 1 plus E. This is the second derivation. First derivation is E is equal to WG by S. लिख लो ये सब साइड में, ऐसे 20-25 है. कंफ्यूज है. फर्स्ट चैप्टर परफेक्ट हो गए तो आप अगले चैप्टर के बारे में ज्यादा मत सोचो, आप खुद भी पढ़ सकते. फर्स्ट चैप्टर आपको बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है. ठीक है. नाउ थर्ड, रिलेशन बिटवीन NA, AC and N. NA means just I told you, that is percentage air voids. AC means air content, and N is equal to porosity. N is equal to porosity. Now relation between NA, AC and N. तीनों के डेफिनेशन देखो अपने आप मिल जाता आपको. AC का डेफिनेशन क्या है? VA by VV. जबकि S का डेफिनेशन क्या है? जब यहाँ जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, VW by VV. ऐसा याद रखो आप. AC और VW में देखो, वाइड्स में जो एयर रहता है वो एयर कंटेंट, वाटर रहा तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन. VW by VV is degree of saturation. VA by VV is air content. Air content is equal to VA by VV. Air content is equal to VA by VV, or N is equal to VV by V. N is equal to VV by V. ये भी आपको डिफाइन करे सो है, ये भी डिफाइन करे सो. ये पोरोसिटी का डेफिनेशन है और एयर कंटेंट का डेफिनेशन है. अच्छा, Na का डेफिनेशन क्या है? Na is equal to VA by V. ये भी डिफाइन करें हम. Na is equal to VA by V.
है ना। अब देखो एन ए इज इक्वल टू, ये दोनों को आप अगर से मल्टीप्लाई करें, एन इंटू ए सी, एन इंटू ए सी को मल्टीप्लाई करो, वी वी गेट कैंसिल्स, सो एन इंटू ए सी इज इक्वल टू क्या बचता, वी ए बाय वी, और यहां पर भी वी ए बाय वी है, वी ए बाय वी इज एन ए सी, therefore एन ए इज इक्वल टू एन इंटू ए सी, मीन्स परसेंटेज एयर वाइड्स इज इक्वल टू पोरोसिटी इंटू एयर कंटेंट। एक और डेरिवेशन है, प्लीज देखो इसमें मैं बताते जा रहा हूं आपको, आप डेरिवेशन प्रैक्टिस करो, ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ रटने से नहीं आता, प्रैक्टिस तो करो ही, ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक, व्हाट इज द बेसिक बिहाइंड दिस। एन ए इज इक्वल टू एन इंटू ए सी, कुछ डाउट है तो पूछो प्लीज बेटा, अदरवाइज आई विल गो फॉर नेक्स्ट डेरिवेशन। सर एकदा एन इंटू एसी कसं आलं सांगा ना. एन इंटू एसी, एन इंटू एसी आपण घेऊच सांग. आता तुम्हाला हे सांगा, एन ए इज इक्वल टू व्ही ए बाय व्ही कळालं ना, एन ए इज इक्वल टू व्ही ए बाय व्ही कळालं, हे ठेवून घ्या तसंच, त्याला इक्वेशन 1 म्हणून. आता ह्या दोन्हीला मल्टिप्लाय करा तुम्ही, एन इंटू एसी, एन इंटू एसी ला मल्टिप्लाय केल्यानंतर व्ही ए बाय व्ही, व्ही इंटू व्ही व्ही बाय व्ही मल्टिप्लाय करावं लागणार. एलएचएस मल्टीप्लाई केल्यानंतर राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई करना ना, उस वक्त वीवी और वीवी गेट कैंसिल्स, तो क्या बचता वी ए बाय वी. सो व्हाट इज वी ए बाय वी, वी ए बाय वी इज एन इंटू एसी, तो वी ए बाय वी की जगह एन इंटू एसी रखो, एन ए इज इक्वल टू एन इंटू एसी, खत्म. आप और सिंपल तरीके से बोलूं मैं आपको, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, पहले आप ऐसा लिखो, एन इंटू एसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस वन, तो वी ए बाय वी आता, वी ए बाय वी इज एन ए, therefore na is equal to n into ac. बहुत सिंपल आहे, या दोन्हीला मल्टिप्लाय करा, तुम्हाला इझी मिळते. कळालं काय, पेपरवर करून बघा. हो सर. कळालं ना. सो 3 डेरिवेशन्स आर क्लिअर. काय नाही बेटा, इथं काय करायचं आपल्याला, अगोदर तुम्ही हे कर नका, डोंट डू दिस वन, यू डू द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप काय करा, n इंटू एसी करा, n इंटू एसी, n इंटू एसी करा म्हणजे हे पण मल्टिप्लाय करा, राइट हँड साइड मल्टिप्लाय केल्यानंतर हे वीवी आहे, इथं खाली वीवी आहे, VV get cancels, it becomes VA by V, and VA by V is nothing but NA, therefore here NaAC पण आहे, therefore Na is equal to NaC. Practice करा बेटा, practice it, even then also if you didn't understand, then I will again teach you. 3 derivations are over now. 3 derivations are over now. We will go for 4th derivation. We'll go for 4th derivation. Quality burn. Now this is again very important. Relation between gamma D, G and E or N. Relation between gamma D, G and E or N or En. Relation between gamma D, G and E or En. Okay, so now what is gamma D? Okay, gamma D is dry unit weight. Gamma D is dry unit weight. What is G? D is equal to specific gravity. E is equal to S, White's ratio, and N is porosity. हे आल्यानंतर हे पण E आणि N मध्ये काय प्रॉब्लेम नाही, E आलं तर N येतं, N आलं तर E येते, आम्हाला रिलेशन माहित आहे त्याला. हा, सो नाउ कमिंग टू हियर, gamma D is equal to WD by V, that is weight of dry solids by volume. मित्र माहित आहे तुम्हाला, WD can be written as gamma S into VS, because gamma is equal to weight by volume, weight is equal to gamma into volume, so WD is equal to gamma S into VS by V. This is equation 1. This is equation 1. Now from the figure means this figure already I am using. From this figure or one more figure I have given you, both the figures I have given you, वॉल्यूम चे फिगर दिलेला आहे तुम्हाला, त्या फिगर ना बघा तुम्हाला काय भेटणार आता, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज 1,
and total volume is equal to 1 plus E. है ना, फिगर मध्ये बघा इथं बघा, व्हॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू 1 and total volume is equal to 1 plus E. ते फिगर पुन्हा काढून घ्या, प्रत्येक डेरिवेशनला एक्झाम मध्ये प्रत्येकदा करून करायचं. सो नाव Vs is 1, V is 1 plus E. So now gamma D is equal to gamma S into Vs. Vs is 1 you write, divided by total V is 1 plus E. So gamma D is equal to gamma S divided by 1 plus E. Gamma D is equal to gamma S divided by 1 plus E. But gamma S is equal to G into gamma W. हे मागे केलेलं आहे बघा तुम्ही, काढून बघा तुम्ही, दिसतंय तुम्हाला. Gamma S is because G is equal to gamma S by gamma W, specific gravity definition. Therefore gamma S is equal to G into gamma W. If you substitute in place of gamma S G gamma W, gamma D is equal to G gamma W divided by 1 plus E. Divided by 1 plus E. यहां तक करेंगे. इसका आगे का तो खैर मैं बहुत इजी है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये समझ में आना चाहिए. इसमें कुछ डाउट है तो पूछो प्लीज, आराम से पूछो, म्यूट करके पूछो, अनम्यूट करके, या चैट बॉक्स में लिखो, या यहाँ पर आपको शर्म आ रही तो बाद में फोन करके पूछो. मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर से नजदीक के कहीं है आप तो कभी कभी विजिट करें, जब आके मिल के जाओ. एटलीस्ट वी शुड नो ईच अदर. द प्रॉब्लम इज बाय टीचिंग ऑन ऑनलाइन, neither you people recognize me nor I recognize you. If you have any doubts, please you ask. Yes, any doubt? Clear है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. Gamma D is equal to G into gamma W divided by 1 plus E. Again, I will repeat the things what we did. ये बेसिक डेफिनेशन झाले, तर हे फॉर्म्युले आठवण ठेवा तुम्ही. डिरायव्हेशन आज मी शेअर करतो प्लीज. E is equal to omega G by S. फर्स्ट डेरिवेशन प्रॅक्टिस करा जाऊन. कुठं न कळलं immediately you can call me at any time. Second, Na is equal to E into 1 minus S divided by 1 plus E. And third is Na is equal to N into AC. Na is equal to N into AC. And fourth one is gamma D is equal to G into gamma W divided by 1 plus E. 1 plus E. Okay. The thing is, कुछ डाउट है तो पूछो बेटा यहाँ तक. एज यू आर हैविंग सम सेशन एट 11:45, तो आपको थोड़ा रेस्ट मिलना, इसलिए मैं आपको जल्दी छोड़ना चाह रहा हूँ, अदरवाइज आई वुड हैव कंटिन्यूड. तो कुछ डाउट है तो पूछो, मेरे टीचिंग के बारे में, या लैंग्वेज के प्रॉब्लम में, स्पीड के बारे में, या सब्जेक्ट के बारे में, सो दैट मेरे को अच्छा लगना कि देखिए चुप मैं चिल्लाते बैठा, आप सुने नहीं तो कोई मतलब नहीं. Whether whatever the things I am teaching, you people are following it. Please. Is it okay? Speed is okay? Voice? सगळं क्लियर आहे ना, काय प्रॉब्लेम नाही. तसं तर बघा ऑफलाईनला ऑनलाईनला there is different. If you have any doubts, okay. Pratiksha is saying no problem. Yes, okay. What about others बेटा? काही प्रॉब्लेम नाही ना, सगळं कळालंय. चारही सगळे डेफिनेशन. आता पुन्हा एकदा सांगतो मी काय काय शिकवलो. अगोदर तुम्ही सॉइलचं डेफिनेशन बघून घ्या वेगळ्या वेगळ्या मेथडनं. ओके, स्लाइड्स मी शेअर करलो, आणि माझ्याकडे चांगले नोट्स पण आहेत, खूप छान नोट्स आहेत. आय विल शेअर विथ यू. तुम्हाला अगोदरच नोट्स दिले तर तुम्ही तेच रट मारत बसतात. तुम्ही पहिले कॉन्सेप्ट शिका. पुन्हा सांगलो मी तुम्हाला. ओके, तो अगोदर आम्ही सॉइलचं डेफिनेशन बघा. सॉइलचं डेफिनेशन बघितल्यानंतर सॉइल मेकॅनिक्स काय आहे हे वाचा. सॉइल मेकॅनिक्स वाचल्यानंतर व्हॉट आर दी
व्हॉट इज ऍप्लिकेशन ऑफ सॉइल मेकॅनिक्स, आणि ऍप्लिकेशन ऑफ सॉइल मेकॅनिक्स मध्ये सगळ्याहून इम्पॉर्टंट आहे फाउंडेशन. थोडं बघून घ्या ऍप्लिकेशन झाल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं आहे, बेसिक डेफिनेशन्स, वॉटर कंटेंट काय, वाइड्स रेशो काय, पोरोसिटी काय, रिलेशन बिटवीन वाइड्स रेशो आणि पोरोसिटी काय, देन डिग्री ऑफ सॅच्युरेशन काय आहे, पर्सेंटेज एअर वाइड्स काय, एअर कंटेंट काय आहे, स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी काय आहे, आणि डेन्सिटी इंडेक्स काय आहे, हे सगळे डेफिनेशन बघून घ्या. गॉट इट. तेवढं सगळं डेफिनेशन बघितल्यानंतर डिरेव्हेशनला या. हे डेरिव्हेशन भरपूर आहेत तस तरी, तर 4 तर मी केलो, 7, 8, 9, 10, 11, ह्याच्यामध्येच 11 आहेत, आणखी पुढे एक स्लाइड आहे. तर एनिवे आय विल शेअर दिस वन विथ यू. 4 पर्यंत मी तुम्हाला केलेलं आहे. पुन्हा एकदा हे प्रॅक्टिस करा. प्रॅक्टिस इम्पॉर्टंट आहे. हे डेरिव्हेशन विचारताच, ऑनलाईन झालं तर विचारणार, पण पुन्हा मी सांगतो, ऑनलाईनच्या धोक्यामध्ये राहू नका. ऑफलाईन पण होऊ शकतंय, ऑफलाईन पण होऊ शकतंय. एक्झाम ऑफलाईनच होणार आहे, तुम्ही आठवण ठेवून घ्या. हे सगळं डेरिव्हेशन तुम्हाला पाहिजेच. तुम्ही म्हणताल सर आम्हाला ऑनलाईन शिकवला तर आम्ही शिकलं नाहीत म्हणून तर चालणार नाही, तिथं काहीच चालणार नाही तुमचं, आठवण ठेवून घ्या. ओके, सो गामा डी इज इक्वल टू जी इंटू गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस दिस इज द फोर्थ डेरिव्हेशन आय लिहू. ह्याच्यावरचं कंटिन्युएशन काय आहे मी तुम्हाला पुढच्या क्लासमध्ये एक कम्प्लीट आणखी डेरिव्हेशन्स घेतो. ओके, सो लेट मी टेक नाउ अटेंडन्स. मोस्ट ऑफ यू आर ऍब्सेंट. 44, 45 ला गेले ते 36 ला आले. मला काय करायचं आहे मग आता, अटेंडन्स आय विल टेक and then three Kshitija, 4 Dipti, 6 Priyanka, 8 Harshada, 9 Anjali, 12 Snehal, 14 Kshitija, 17 Neha, 18 Chaitali, 19 Vaibhavi, और 20 Sneha, और 21 Sonali, 22 Shweta Lee, 24 Vaishnavi, Vaishnavi, 25 Sudharani, 26 Rajnandini, 27 Sonali Sawant, 28 Rutuja Shirke, 29 Akanksha, 30 Vaishnavi, 31 Pratiksha, 33 Rohit, 32 girls are there here, maximum strength is there. 33 झाला की 37 Samadhan, 38 Swapnil, 42 Vishal, 43 Vishwajit, 45 Samadhan, 46 Uday, 51 Ankit, 53 Prem, 59 Amol, 23 Aishwarya. मुलं जास्त होते, आता कमी झालेत. कोणी येऊन गेलेले असलं तर चॅट बॉक्स मध्ये लिहा. स्टिल आय वेट फॉर 5 minutes.